हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड सब्जेक्ट्स। आज हम बात करेंगे RTMNU के AI के पेपर के बारे में। तो सबसे पहले आपको पेपर कहाँ सर्च करना है हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपने गूगल ओपन किया, गूगल में आप जाएंगे PYQ ऑनलाइन, आप सर्च करें। फिर आप उसके बाद आपको सबसे पहले ये दिखेगा pyqonline.com, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको बोर्ड वाइज क्वेश्चन पेपर दिखेंगे, यूनिवर्सिटी वाइज क्वेश्चन पेपर दिखेंगे। सारे पेपर्स इसमें अवेलेबल हैं। स्टेट वाइज वेबसाइट, पॉपुलर एग्जाम्स, अब तो इसमें PYQ JEE के और बाकी सबके PYQs भी अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट में, और उसमें यूनिवर्सिटी का नाम हम देंगे RTMNU, और आपको दिखेगी ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी RTMNU। इसमें आप क्लिक करेंगे और आप इसके अंदर हमको B.Tech के AI के पेपर को सॉल्व करना है। तो हम उसके अंदर जाएंगे, CS एंड AI रिलेटेड। देन फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है। फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर में हमारे पास सारे पेपर अवेलेबल है। देखिए 2025 के ऑल पेपर्स आर अवेलेबल। सपोज हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर सॉल्व करना है, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये फिफ्थ सेमेस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर है 2025 का। इसको क्लिक करेंगे और फिर इस पेपर को डाउनलोड करेंगे। फिर आप इसको डाउनलोड करें। यस, तो ये फिफ्थ सेमेस्टर B.Tech का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज AI एजेंट? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज AI एजेंट? एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ इट। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ AI। एक्सप्लेन प्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ये और में है, तो आप इन दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हैं। एलैबोरेट ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है AI में। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन A** एल्गोरिथम इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन, constraint satisfaction and solve the crypt arithmetic problem, send plus more is equal to money। ये हमारी क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम है। यस, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू फॉर्मूलेज इन प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक आपका इंपॉर्टेंट है। एवरीवन वॉक्स और टॉक्स, ये इनको सबको प्रेडिकेट लॉजिक में अपने को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑर्डर इन्फरेंस रूल विथ मॉड एक्सपोनेंट्स, यूनिफिकेशन। फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग, एंड डिस्कस अबाउट प्लानिंग विथ स्टेट स्पेस सर्च विथ एग्जाम्पल। Bayesian network and inference in Bayesian network. Elaborate the hidden Markov model with neat diagram. And fuzzy logic, natural language processing, exoemy, temporal model in AI। ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। तो अब हम आंसर की बात करेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं। आपने देख लिया होगा सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमको PYQ ऑनलाइन सर्च करना है, उसके बाद हमको यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट में जाके RTMNU सर्च करना है, और उस पर क्लिक करके हमको पेपर डाउनलोड करना है। तो ये हमारा पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको बंद करते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। व्हाट इज एन AI एजेंट? एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ इट। तो AI एजेंट क्या होता है? AI एजेंट एक ऑटोनोमस एंटिटी है दैट परसीव्स इट्स एनवायरमेंट थ्रू सेंसर्स, प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड टेक एक्शन upon that environment using actuators to achieve specific goals। एक ऐसी एंटिटी जो एनवायरमेंट को परसीव करती है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, प्रोसेस करती है उस इंफॉर्मेशन को और टेक एक्शन अपॉन दैट एनवायरमेंट, और उस एनवायरमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करती है यूजिंग एक्चुएटर्स टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स। तो ये आपका AI एजेंट होता है। आपको ये ह्यूमन की तरह फील होगा। एक एनवायरमेंट है जिसमें सेंसर्स हैं, आपके जैसे सेंसर्स होते हैं, आपके 5 सेंसर्स जो होते हैं जिनसे आप सेंस करते हैं, फिर आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं। तो वो आपका AI एजेंट होता है टू अचीव द स्पेसिफिक गोल।
टू टाइप्स में हमको यहां पे डिस्कस करना है। तो टू टाइप्स होते हैं सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट मतलब एक्ट सोली बेस्ड ऑन द करंट परसेप्ट, इग्नोरिंग द हिस्ट्री ऑफ परसेप्शंस। करंट जो आपका परसेप्ट है उस पे बेस सोली काम करता है, हिस्ट्री पे काम नहीं करता है। इट यूजेस कंडीशन एक्शन रूल। सपोज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, टर्न ऑन द एसी। सो दिस इज सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। अब यहां पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एआई एजेंट। हमने फिर से डिफाइन किया है इसको, एन ऑटोनोमस एंटिटी दैट परसीव्स इट्स एनवायरमेंट, मेक्स डिसीजंस एंड टेक्स एक्शंस टू अचीव गोल्स। ओके, तो अब इसमें अगर हम कैपेबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो रिएक्टिव एजेंट्स, लिमिटेड मेमोरी एजेंट्स, थ्योरी ऑफ माइंड एजेंट्स, सेल्फ अवेयर एजेंट्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस लेवल है। दूसरा है बाय फंक्शनैलिटी और पर्पस, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग एजेंट्स, टास्क एग्जीक्यूशन, कन्वर्सेशनल, रिकमेंडेशन, मॉनिटरिंग एजेंट। इसका एग्जांपल है वेब क्रॉलर्स। जैसे आप वेब क्रॉलर्स देखते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के जो टाइप्स हैं, जैसे चैटबॉट्स हैं, कन्वर्सेशनल्स होते हैं वो चैटबॉट्स। चैटबॉट्स आर कन्वर्सेशनल एजेंट्स। और आपके रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं, जैसे हम रिकमेंड कर रहे हैं किसी को तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम में आता है। ठीक है, बाय आर्किटेक्चर मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात करी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, लर्निंग एजेंट। तो गेम प्लेइंग एजेंट्स जो होते हैं वो गोल बेस्ड एजेंट होते हैं। ठीक है, और पर्सनलाइज लर्निंग एजेंट तो वो लर्निंग एजेंट होते हैं। ठीक है, बाय लर्निंग अप्रोच इट बेस्ड ऑन हाउ द एजेंट लर्न एंड इम्प्रूव्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। एजेंट किस तरीके से लर्न करता है और एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करता है। इसमें आपकी लर्निंग टाइप्स आती हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीएनफोर्समेंट लर्निंग, हाइब्रिड लर्निंग। तो ये सारे आपके ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग एंड हाउ दे इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्पैम फिल्टर। ओके, सो बाय इंटरैक्शन एनवायरनमेंट इसमें है सिंगल एजेंट सिस्टम, मल्टी एजेंट सिस्टम, ह्यूमन एजेंट सिस्टम। जैसे आपका स्मार्टफोन असिस्टेंट है वो सिंगल एजेंट है, ऑटोनॉमस ड्रोन है आपका मल्टी एजेंट है, एआई को पायलट है ह्यूमन एजेंट है। बाय ऑटोनॉमी लेवल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, फुली ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस, ह्यूमन इन द लूप एजेंट। ऑटोनॉमस व्हीकल है, जैसे फुली ऑटोनॉमस, आपने पूरा सिस्टम जो है ऑटोनॉमस व्हीकल का पूरा व्हीकल जो है वो ऑटोनॉमस ड्रिवन होगा, मतलब ऑटो ड्रिवन होगा। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स टूल्स हैं सेमी ऑटोनॉमस, मतलब इट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरैक्शन इन्वॉल्वमेंट। एआई असिस्टेंट ह्यूमन इन लूप। So this is the basic classification, and if we are talking about the two types, then it is simple reflex which acts solely on the current percept, ignoring the history. Then model based maintains an internal state or model of the world to track aspect of the environment that cannot be viewed right now, helping it handle partially observable environment. तो इसमें मॉडल बेस्ड में एक इंटरनल स्टेट मेंटेन करते हैं जो ट्रैक करेगा एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट कैन नॉट बी व्यूड राइट नाउ। अभी आपको नहीं दिखाई देंगे वो एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो आप उसको ताकि ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट को हैंडल कर सकें। पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, आपको फुली वो चीज नहीं दिखाई दे रही है, पार्शियली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये होता है मॉडल बेस्ड और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, देन द सेकेंड क्वेश्चन, ये हमने एआई एजेंट को यहाँ पे और एलोबरेट करा है। वो ऑटोनॉमस एंटिटी जो एनवायरनमेंट को परसीव करती है सेंसर्स के द्वारा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है एंड टेक्स एक्शन अपॉन दैट एनवायरनमेंट यूजिंग एक्चुएटर्स। ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, परसेप्शन हो रहा है, आप इस एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं जैसे एक ह्यूमन देखता है, और एआई एजेंट उसको प्रोसेस कर रहा है पूरी इंफॉर्मेशन को, और फिर उस पर एक्शन लिया जा रहा है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो अब वो सारी चीज किसको इफेक्ट करेगी? इस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे दो टाइप के हमने एआई एजेंट बोला, जैसे आपका करंट परसेप्ट है एनवायरमेंट का, कंडीशन एक्शन रूल, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वी आर टर्निंग ऑन द एसी. एग्जाम्पल, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 टर्न ऑन द एसी. दूसरा है मॉडल बेस्ड. मॉडल बेस्ड में क्या होता है, इन्वायरमेंट को अगेन परसीव ये भी करेगा, अपडेट करेगा इंटरनल स्टेट को, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, डिसीजन मेकिंग यूजिंग मॉडल, डिसीजन मेकिंग हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडल, फिर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे. तो जैसे एग्जांपल है रूम टेम्परेचर ट्रेंड जो है क्या है और आउटसाइड वेदर क्या है, टू टर्न ऑन द एसी नाउ. व्हाट इज द टेम्परेचर ट्रेंड, हमारे टेम्परेचर का ट्रेंड क्या है और बाहर का वेदर क्या है, उसके हिसाब से एसी ऑन होगा. यहां पे आप कोई कंडीशन नहीं दोगे, इसमें अपने आप एसी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑन होगा. ये मॉडल बेस्ड एजेंट होगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई? रैशनैलिटी, मेकिंग द बेस्ट डिसीजंस, adaptability, learning from the data, autonomy and the capability to mimic human cognitive functions. जैसे ह्यूमन का कॉग्निटिव साइंस है, वो रीजनिंग कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, परसेप्शन कर सकता है. तो ये सारे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एआई के भी हैं. जैसे रैशनैलिटी, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग फ्रॉम द डेटा, डेटा के हिसाब से अडेप्ट करना है. ऑटोनॉमी मतलब ऑटोनोमस है, खुद डिसीजन लेना है. एंड केपेबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक रीजनिंग, ह्यूमन की तरह रीजनिंग करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और परसेप्शन. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई. देन एप्लीकेशंस, देयर आर वास्ट एप्लीकेशंस नाउअडेज इन एआई लाइक द हेल्थ केयर, डिजीज डायग्नोस्टिक्स have been done in the healthcare, autonomous vehicles, self-driving cars, finance, fraud detection. In the self-driving cars or the driverless car, the vehicles are automatically driven without the driver. Finance में fraud detection. If we are having some fraud, then we can detect with the help of AI. Then e-commerce, recommendation engines. आप देखते हैं कि गूगल में आपने कोई चीज सर्च करी, अगर आपने कोई जूता सर्च करा है या आपने कोई ड्रेस सर्च करी है, तो आपके रिकमेंडेशन में वही ड्रेसेस, वही जूते या वही मोबाइल बार बार आता है. तो ये कहां से हो रहा है? ये रिकमेंडेशन इंजिन्स के थ्रू हो रहा है. एंड ऑटोमेशन, दैट इज रोबोटिक्स इन मैन्युफैक्चरिंग. रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक्स का बहुत यूज हो रहा है कि रोबोटिक्स अपने आप ऑटोमेशन कर रहे हैं. So these are some of the applications of AI. You can write this question in more detail about each and every application. There are many more applications. I have discussed very few here. Okay. Explain the production system and its characteristic. What is a production system? A cognitive and computational architecture used in AI to implement the search algorithms and the knowledge representation. Okay. ऐसा कंप्यूटेशनल आर्किटेक्चर जो कि सर्च एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करता है और नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, उसको प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स. इसमें कुछ प्रोडक्शन रूल होते हैं. कंडीशन एक्शन पेयर्स, जैसे अभी हमने देखा कंडीशन एक्शन पेयर मतलब इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 देन ऑन द एसी, दैट इज कंडीशन. अ वर्किंग मेमोरी, व्हाट इज द करंट स्टेट, एंड अ कंट्रोल स्ट्रैटेजी और द इन्फेरेंस इंजिन टू चूज विच रूल टू अप्लाई. कौन सा रूल हमको अप्लाई करना है, ये होता है. उसमें प्रोडक्शन रूल्स होते हैं और वर्किंग मेमोरी होती है. सो व्हाट इज अ प्रोडक्शन सिस्टम? इट इज एक्चुअली अ कंप्यूटेशनल आर्किटेक्चर विच इज यूज्ड इन एआई to implement the search algorithms and knowledge representation. It consists of three things: production rule, working memory, and a control strategy. Production rules are nothing but the condition action pairs. A working memory is a current state of the system, and the control strategy is the engine which chooses which particular rule to apply. Okay. Then what are the characteristics? The characteristics are modularity, okay, separation of knowledge and control, and simplicity.
Okay, what do we mean by modularity? Modularity means the rules can be added, removed independently. One rule cannot be embedded in another rule, that is the modularity. It can be added and removed independently. Separation of knowledge and control. Rules are distinct from the selection mechanism. And simplicity, rules follow straightforward if-then format. There is no complexity in the rules. There are simple rules, and the knowledge and the control are different. Okay, rules are distinct from the selection mechanism. So these are the characteristics of a production system. Then elaborate the breadth first search and the depth first search. What is the breadth first search? You all know. A tree or graph traversal algorithm that explore all nodes at the present depth level before moving to the nodes at the next depth level. It uses a FIFO-TECH queue and guarantees finding the shallowest goal node. Okay, and what is the depth first? It explores as deep as possible along each branch before backtracking. It uses a LIFO list or a stack. Okay, so and has a lower memory requirement than BFS, but it is not guaranteed to be optimal. Okay, so what is the differentiation between uninformed and the informed search? Next question. In uninformed search, it is also called blind search. An informed search is called heuristic search. So what is a blind search? It has no information about the closeness of a state to the goal. It has no information regarding the closeness of the state to the goal. And what is heuristic? It uses the domain specific knowledge or the heuristic function to estimate closeness to the goal. It always involves a heuristic function. That is why it is called heuristic search. What is the efficiency? It is less efficient and it is highly efficient. It narrows down the search space and it is explores state systematically without direction because it is blind search. Okay, what are the example? BFS and DFS are in the blind search, and greedy best first search is the informed search. So this is the differentiation between the uninformed and the informed search. You can see this diagram. Okay. Informed search or uninformed search systematically explores without the direction. It is not having any direction. This particular robot is not having any direction. It is moving the random moves and it has no information about the closeness of the goal. If this is the goal, it is not having any information regarding the goal. On the other hand, if we are talking about the informed search or the heuristic search, it has the clear information about the goal. It involves a heuristic function which estimates the closeness to the goal. Okay, so this is the diagram which it states that explain hill climbing algorithm, how it is utilized. So what is a hill climbing algorithm? As you all know, a local search algorithm that moves continuously in the direction of increasing values uphill to find the peak or the optimal solution. It evaluates only the immediate neighbor states and selects the best one. Okay, and how it is utilized? It is utilized always in optimization problem, where the goal is to find a peak that maximize the objective function. So we are using it in the routing, scheduling or network design. We have to find the best optimal path, then we will use this hill climbing. Especially when memory is limited, since it does not maintain a search tree. Okay, where the memory is limited, there we are using the hill climbing. Differentiate between depth first and breadth first search. What is the depth first and breadth first search? The data structure which we are using in depth first is LIFO, that is the stack, and in breadth first we are using FIFO. The space complexity is O B into M, linear lower memory, and here the exponential O order of B to the power D, that is exponential. It requires high memory. Optimality, it is not optimal. It is optimal if path costs are non-decreasing functions of depth. Okay. Explain the A** algorithm in detail with example. So an informed search algorithm that finds the shortest path from a start node to goal node by combining the cost to reach a node
and the estimated cost is called the A** algorithm. And what is the evaluation function here? F of n is equal to g of n plus h of n, where g is the actual cost from the start to the node n and hn is the heuristic involved, the heuristic estimate of the cost from node to the goal. Okay, as you know, this comes under the heuristic search. The process can be broken down into the following step. First we have to initialize, then we will apply the loop, then we will check the goal, and then we will expand the node and then repeat. Okay. Explain constraint satisfaction and solve the crypt arithmetic algorithm. So what is the crypt arithmetic algorithm? It is a send more is equal to money. So m is the carryover from the highest place addition, s plus m is equal to 1. Substituting m is equal to 1 into s plus 1 is equal to 10. We will have 10 plus o. So by the systematic deduction of the unit digits, we will find out that this is the send more money. M, the value of m is equal to 1, o is equal to 0, m is equal to 1, s is equal to 9, e is equal to 5, n is equal to 6, d is equal to 7, r is equal to 8, and y is equal to 2. Translate the following sentences into formulas in predicate logic. SS is equal to x is the student, wx is equal to s walks, tx is equal to s talk, rs is equal to s x run, smx is equal to x smile, and lxy is equal to x loves y. Okay, so everyone walks or talks. So everyone walks or talks means walks means wx, talks means tx, and for all x, wx or tx, everyone walks or talks. Okay, every student who talks walks. So here we have to involve the student also, sx. So every student who walks talks. So for all x, sx, if he is walking, then he will talk. So if sx and wx, then tx. If he is a student and he is walking, then he will talk, because we are saying every student who walks talks. So these are the predicate logic. No one who runs walks. No one who runs, matlab not. Here we will have to involve the not. So no one who runs walks, matlab for all x, if he is running, he will not walk. So no one who runs walks. For not wx, and there exists x, rx and wx. Okay. Every student smiles. Every student smiles, so we have to involve smx function here. Every student smile, sx is smx. Everyone loves himself. For all x, x. ही अगर किसी दूसरे को लव करने की बात होती तो वी हैव टू इन्वॉल्व y here, but everyone love himself, so L of x comma x for all x. Okay. Every student except George smiles. So here we have to involve every student except George. So if x is not George, then he will smile. Okay. If it is George, he is not smiling because every student except George smiled. Sx and x is not equal to George, then he will not smile if x is equal to George. Okay. Explain first order inference rules with modus ponens. What is unification? So first order inference rule and modus ponens is, inference rules are what? They are used to derive the new logical sentences from the existing one. Generalized modus ponens are states that if a rule P implies Q is true and the premise P is true under a substitution theta, then the conclusion Q can be inferred. We can infer Q. So what is unification? A key component of first order inference. It is a process of finding a substitution theta that makes two different logical expressions look identical. For example, unifying knows John X and knows John Jane yields the substitution theta is equal to Jane. So this is knows, the unification of knows. We are substituting Jane in place of X. So what are the short notes on frame,
script. So short note on frame, script and semantic nets. What is a frame? A collection of slots and fillers. It is a collection of slots and fillers that are used to describe a complex real world entity or stereotype. It supports inheritance. A script, a structured representation describing a predefined stereotypical sequence of events in a particular context, like a restaurant script where it includes entering, ordering, eating and paying. Then semantic net, it is a graphic representation of the knowledge consisting of nodes and directed labels, edges, etc. Okay. Then question number 7th, forward chaining and backward chaining. Forward chaining a data driven inference technique. It starts with the known facts in the knowledge base and applies the inference rules like the modus ponens in a forward direction to extract the new facts until the goal state is reached. And what is the backward chaining? It starts with the goal state and work backward through the rules to see if there are known data facts that support the given goal. What is the partial order planning? Explain with example. Partial order planning, a planning approach that handles sub-goals independently without prematurely committing to a strict linear order of action. It builds a plan with parallel or loosely ordered steps, ordering them only when a conflict arises. Putting on shoes and socks. The sub-goals are right shoe on, left shoe on. A partial order plan that states that you must put on the right socks before your right shoe and left socks before your left shoe. So, however, whether you put on your left sock or right socks first does not matter. So this is a partial order planning, because we have to plan that handles the sub goal independently without prematurely committing to a strict linear order of actions. Discuss about planning with a state space search with example. Planning with state space search, an approach where a plan is discovered by searching through a graph of states. It can be executed by forward state space or backward state space. Okay. So what is forward? It starts from the initial state and applies the valid actions. And what is backward? Starts from the goal state and applies the action backward to reach the initial state. Okay. So block word problem is the example of that. So formulating the state space first, initial state, block B is on the table, block A is in the top of block B, the robot hand is empty. Goal state, block A is on the table, block B is on top of block A, block C is on top of block B. So what are the actions? Unstack XY, stack, pick up, put down. Okay, so initial state A on B, action unstack A comma B. Hand holds A, B is clear on table. Action put down A. So A is on table, B is on table. Pick up B. Hand hold B, A is clear on table. Stack B A. B is on A, C is on table. Then pick up C. Hand hold C, B is clear. Then stack CB. So C on B on A, that is the goal state. So this is the final generated plan in the sequential array of distinct actions. Explain planning graph with example. What is a planning graph? A highly efficient layered graph structure used to estimate the cost of achieving a goal. Consider a have cake and eat cake problem. Layer S0 contains the literal have cake and A0 contains the action eat cake, which negates have cake and produces the eaten cake. So layer S1 contains both have cake and eaten cake. A mutex link is drawn between these because you cannot simultaneously have a cake and have eaten it. Okay. Then explain the Bayesian network and inference in Bayesian network. A probabilistic graphical model that represents a set of random variables and their conditional dependencies via directed acyclic graph. Nodes represents variable, edges represent conditional dependencies. Each node is mapped to conditional probability table. Inference in Bayesian network. The process of computing the posterior probability distribution of a set of query variables given some observed evidence variable. Okay. So elaborate the hidden Markov model with neat diagram. A statistical model used to model systems assumed to be a Markov process with unobserved state
While the state themselves are invisible, they generate visible outputs or tokens that depends on the current state. Explain the following. Fuzzy logic, natural language processing, exoemy. Fuzzy logic is a form of many valued logic that deals with approximate reasoning rather than fixed and exact reasoning. Unlike classical binary logic where variables are either 1 and 0, fuzzy logic variables have truth values that range in between degrees 0 and 1. That is slightly warm, very hot, hot, like this. And what is the natural language processing? It is a subfield of AI focused on enabling computers to understand, interpret, manipulate and generate human languages. The core task includes syntax analysis, semantic analysis, machine translation and speech recognition. What are the exoems? In knowledge representation, exoems are the fundamental statements, foundational statement, rules or propositions that are accepted as true without proof. Explain temporal model in AI. A representation framework used in AI to capture how the state of the world evolves over time. Instead of viewing the world as static, time is treated as sequence of slices. That is a temporal model. T, T plus 1, T plus 2. These are discrete time steps. So what are the characteristics? It describes transition using transitional model, how the current state depends on the past states. And examples are hidden Markov model, Kalman filters and dynamic Bayesian networks. So that's all for the paper. We have solved the AI paper, and if you want any other paper, please let me know in your comment section. And तब तक के लिए आप A to Z सब्जेक्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.